Okay, hello everyone. My name is Talveer Singh and welcome back to my new video. And in today's video, I'm gonna talk about very important topic. आज मैं बहुत important topic discuss करने जा रहा हूँ इस वीडियो में. That topic is जब भी हम English सीखते हैं, we start to feeling bored after 2 months, after 3 months. कुछ time के बाद हम उसमें interest lose करना शुरू कर देते हैं. Here I'm gonna talk about how you can maintain your interest and create even more interest in learning process में कैसे more interest create कर सकते हैं. First thing which really we need to do is we need to start enjoying it, like we enjoying any other activity of our life. For example, watching movie, listening music, playing video game. We enjoy that kind of activity, but we never enjoy English learning process. We actually hate it. So don't hate it, right? Start enjoying it a little bit more. Okay. Second thing you need to do, you need to set a big goal. We never ever have a big goal for English, right? We just learning it and we never ever set a big goal. So second thing you need to do is you need to set a very big goal. That goal would be कैसे गोल डिसाइड करें अपने इंग्लिश के लिए, वो गोल क्या होगा और किस टाइम में आप उसे अचीव करने ये भी डिसाइड कीजिए. फॉर एग्जांपल आपका गोल हो सकता है लाइक आई वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विद इन 6 मंथ, राइट. आपका गोल है कि मैं 6 मंथ में फ्लुएंट होना है इंग्लिश में. नाउ डिसाइड टू डू सम एक्टिविटी. Okay, try to do some each and every day activity to achieve that big goal. अब each and every day में जो छोटी छोटी एक्टिविटी उन्हें करना शुरू कर दे ताकि आप अपना बड़ा जो गोल है डिसाइड किया है you can achieve it, right? So third thing that comes in my mind, that is the most important thing. We are learning English, right? But we are not using it. So start using it, man. Okay, आप उसका आप सीख रहे हैं मगर आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके माइंड के लिए दैट एक्टिविटी इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट. सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू, फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. जैसे हम क्या होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, वी टॉक टू आवरसेल्फ, राइट, ईच एंड एवरी डे. सो स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. ओके, अपने आप से बात करना शुरू कर दें इंग्लिश में, उसकी हैबिट बनाएं. Second thing that you really need to do, you just really need to find a friend or two friends who really can talk to you in English. जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. You can easily find that, right? And even you can able to talk with them for 30 minutes, for 40 minutes, or even for 20 minutes. That will be enough for you. But try to do it each and every day. All right. So these are the three things to get out of boredom. Okay. So I really hope that you really like that video. If you really like it, then please subscribe this channel, Focused Mind, in natural way to learn English, to get more and more video from my side if you really want to be fluent in English. So thank you very much for watching that video. Take care, my friend.